Hi viewers, we will start our today's project with 4 bugle shaped beads along with this 4 seed beads. We will tie a knot and then we will start our project. We have started, as you can see, we have started one box we made with 4 bugle beads and 4 seed beads. We will be adding these bugle beads in light and dark colors. We have made 3 boxes now using bugle shaped beads, aqua color, light and dark, and silver color, and the same color we are using in seed beads, light and dark, aqua blue. Now we will join these 3 boxes with 3 beads, 2 bugle beads and 1 seed bead. You can see 3 total beads, 1 seed bead and 2 bugle beads. We will join from one seed bead of this corner to another side bead, right to left seed beads. We will go through these 2 seed beads and we will add 3 beads. Now from other side add more 3 beads, 2 bugle bead and 1 seed bead. Our needle is from 1 seed bead to another seed bead. We will add it. Our needle, we passed our needle through seed bead and now it is added. These beads are added and this is join. हमने इसको एक शेप दे दी है राउंड शेप में. ये अब आगे हैं हमारे बॉक्सेस, 4 बॉक्सेस बने हैं. 4 हमने इस तरह से 4 बॉक्सेस बनाए हैं बगल बीड्स के साथ. अब हमने इनकी जो राइट और लेफ़्ट 2 साइड्स हैं, ऊपर और नीचे, अपर एंड लोअर पार्ट, 2 साइड्स आर देयर. यहाँ भी हमने इसी तरह बगल बीड्स को ऐड करना है 1 by 1. We will be adding 4 beads 1 by 1. 1 silver, we picked 1 silver bugle bead. We are adding it, passing our needle through seed bead. यहाँ जो 4 seed beads आपको नज़र आ रहे हैं उन सब में से हमने एक एक बार नीडल को गुजारते हुए एक एक बगल बीड को हमने ऐड करना है. और इस तरह हमने यहाँ पर इस साइड पे हमने 4 ऐड करने हैं 1 by 1 और फिर हम इसी तरह से दूसरी साइड पे भी ऐड करेंगे. एक साइड पे पहले हम ऐड कर रहे हैं 1 by 1 bugle beads, passing our needle through seed beads. We have added 4 beads here. Now we will proceed on the other side of this beaded bead and the beads we will add the same process. We will repeat same process. एक सीड बीड से दूसरे सीड बीड में नीडल को घुसाते हुए हमने एक बगल बीड एक्वा ब्लू ऐड किया. Then we have now added 4 beads in the same way. It's our beaded ball is complete. Its boxes are complete. Now we will start the next process. We will be adding seed beads in aqua blue color, light and dark color, silver and aqua blue beads, seed beads we will be adding here. In each box, our beaded box, which will be made with the bugle beads, we will be adding now 5 seed beads in each box. First we will add 3 seed beads, passing our needle through bugle bead. हमारे बॉक्सेस के जो बगल बीड्स हैं हम उनमें से नीडल को घुसाते हुए
हमने इनको सीड बीड्स को ऐड करना है. We have added in start we have added 3 seed beads, 8 toes. Now we will add 2 seed beads, more 2 seed beads, one by one right side and one left side. We will be adding all 5 beads, all of 5 beads we will adding, passing our needle through bugle beads. हम अपनी नीडल को बगल बीड्स में से गुजारते हुए इन बीड्स को यहाँ ऐड करेंगे. नाउ वी आर एडिंग इन अदर बॉक्स. हमारे बीडेड बॉल का जो दूसरा नेक्स्ट बॉक्स है, अब हम उसमें ऐड करें. इस तरह से हमने तमाम बॉक्सेस में ऐड कर लेने हैं. पहले 3 बीड सीड बीड्स और फिर वन बाय वन 2 सीड बीड्स मोर वी विल ऐड हेयर. In all boxes we will repeat the same process. बहुत ही डिफरेंट स्टाइल का ये बीड हमने ये बनाया है. बिल्कुल नया स्टाइल का है. आप देख सकते हैं कि इसकी लुक भी बहुत एलिगेंट है और डिफरेंट है. और हमने कलर कम्बिनेशन लाइट एंड डार्क में रखे हैं. We have selected light and dark color combination which is looking elegant. Its look is very elegant and gorgeous. We will be adding 5 seed beads in all boxes of bugle beads. In the same way we will complete this process. We have completed it, adding 1 seed bead more here. This box will be also completed in the same way. तमाम बॉक्सेस को इसी तरह सीड बीड्स ऐड करके कंप्लीट कर लेंगे. आप देख सकते हैं कि ये अब हमने ऐड कर लिए हैं. वी हैव एडिड सीड बीड्स इन ऑल बॉक्सेस ऑफ बगल बीड्स. नाउ this round is complete. Now we will pass our needle through bugle beads, and here in the center of bugle beads, here it is a seed bead. We have selected this seed bead for adding earring wire here. You can see we have taken 2 bugle beads with earring wire. एयरिंग वायर के होल से और बीड्स के होल से नीडल और थ्रेड को गुजारने के बाद हम यहाँ इसको ऐड कर रहे हैं. वी आर एडिंग हेयर, पासिंग थ्रू आर नीडल थ्रू सीड बीड ऑफ सेंटर सीड बीड. वी हैव एडिड इट. वी विल pass our needle 2 or 3 times here. Now we are proceeding in the lower beads. Here we will make knots 2 or 3 times. We will make 2 or 3 times knots here, passing our needle through different beads to secure our beaded bead. Here we will trim our thread, extra thread. We will trim extra thread. It is ready now. Our earring, bead earring in aqua blue color.
light and dark color combination. It is ready to wear. Its look, you can, it's totally a new style, different look. You can agree with me, you will agree with me, it's total different look. It's ready to wear, its final look. Kindly don't forget to subscribe and like and share and comment on my channel. I will say bye here. Take care. Allah Hafiz. See you again. Bye.